So next part we cover, so that is call us how to give a CSS background. For giving a CSS background, so we are using here what, like you can say the CSS background property specify the background color, image और position of the HTML element. Okay, तो आपका अगर बॉडी का बैकग्राउंड, लाइक इफ यू वांट टू गिव ए बॉडी बैकग्राउंड, then we're using background color lavender, red, so that you can define any kind of background by using of CSS property. By using of CSS property you can give a background to your body. So how it is working, so let me explain this part. You can give a background color, you can give a background image. Okay, and if you pass only background, then all the thing is applied. Means you can apply the color, if you can apply the images. Okay, ମାନେ ଆଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଦେଲେ ଆମେ କେବଳ କଲରଟା ଦେଇପାରିବା, ଇମେଜ ଦେଲେ କେବଳ ଇମେଜ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା. ଓକେ, ତ you can say its property. This is the code that we have defined. So I will write a program first. So here I pass HTML, then index HTML. So here I define heading information, then
End of heading. And here I pass a style tag. And style is end here. Then here I pass the CSS property. That CSS property is background color. So I write here background color. Suppose red. Okay, so it is change the body background color of the body. In body tag, we have to define background color. In body, if I passing here H1 heading 1, this is 1, then end of heading. Okay, तो फाइल टा मोर बनी गला एबे मोर बॉडी रो बैकग्राउंड टा ऑटोमेटिक रेड कलर आसीबो तो फाइल सेव एज background.html. I save the file. Now I open this file here. Excuse. Okay, now one I will open. Check. Now my color has changed here. Body background color. So similar way, you want to add a images here. You can add the image. Okay, so for adding a image, here I have to pass image src background image, then by passing the URL. Okay, now let me check one picture.
suppose which image this one. For adding image, right here, open with Internet Explorer. So because why I write this one, to copy the path of the image. Then where image they're passing here colon URL function. The URL is the function here. URL. Then we're passing a path. File save as background img dot html. Now let me check how it is working. Okay, till what are the practical I have covered, you do. Okay, and you send. Okay, so till now what are the practical I cover? You just do it and send me. And during the practical, if you have any kind of problem, then let me know. Okay, I just open. See there. As the picture is little bit small in size, then it is showing you in the dual part. Okay, clear this one? Yes, sir. So in this way, you can add the background image or themes of your website. Okay, if you want to add the themes of the website, you can add it in this way. Try to add the picture which is size of like 2000 into 3000, means which is having a big pixel picture. You have to add it. If you add the big pixel picture, then this problem has not come. It is not showing you repeatedly. Okay, so depending upon the your screen resolution, it is adjusted. Clear? Again, sir. Let's copy it.
it is only background. The next part we are going to cover the background we have covered. Then grouping the next nesting style. It's saying you consider a scenario where you want to separately okay, consider a scenario where you want to all your heading label to have same color. Okay, means मोर जिते भी सब heading सब रहिबो ताको मु same color देबी. Instead of making the CSS rule for each heading separately or applying the class selector for each heading separately, you can rather the group them. Okay, तो मते each heading को separate color देबा दरकार नहीं किबा class बने की से heading रे apply करिवा दरकार नहीं. मु सब जाको grouping कर देबी. जेंति कि देखो एग्जांपल ले कोन होउची मु heading 1 देली text alignment center. Okay, text alignment center and एठी रहला text style भितरे heading जोटा सब रहिबो h1 जोड़ा को रहिबो सेटा देखिबो alignment center टा देखिबो एटा देखैला. नाउ एबे मु कोन करिवि धर मु सेम स्टाइल टा अप्लाई करिवि पैराग्राफ पय अप्लाई करिया को चाहूची सेम स्टाइल टा आ सेम स्टाइल टा मु हेडिंग पय भी अप्लाई करिया को चाहूची. So that there is no need to write the same style for the heading and same style for the paragraph, and don't apply any kind of class selector. You can use here h1 comma p. Okay, heading paragraph color is red, so automatically the heading and paragraph color becomes red here. Clear? It is called the grouping the style. So there is no need. Grouping style are used to apply the same style on one or more than one selector by combining them into a single group. These selector in this group are separated with the comma. Selector 1, comma selector 2. The सर आउ थरे टिके कहबे माने एटा देखो एटा धर मु कोन करबी ना हेडिंग आउ पैराग्राफ पई मु गोटे कलर दउची रेड. तो हेडिंग टा कोन आसला रेड कलर आसला एटी पैराग्राफ टा देखो रेड कलर आसला. तो एटा कोन कले मु ग्रुपिंग कली. मु जदि ग्रुपिंग न करबी ताले मते एमती डिफाइन करिया पड़िबो. माने हेडिंग पई गोटे स्टाइल एटी डिफाइन करा हला पुनी आ तळे पैराग्राफ पई पुनी डिफाइन करिया पड़िबो. माने मु से कहूची जे तमे दी थरा जदि दीटा एलिमेंट को तमे सेम स्टाइल दबा को चाहूचो तो दी थरा एमती डिक्लेरेशन न करिके तमे एमती ग्रुपिंग कर दबो. जेतरा दरकार ग्रुप कॉमा सेपरेशन देके यूज कर परिबो h1p तो ऑटोमेटिक आसी जीवो. क्लास सिलेक्टर रे भी हमें करि परिबा किंतु क्लास सिलेक्टर भी दरकार नै. तो क्लास सिलेक्टर हेले पुनी हमको कोडिंग एक्स्ट्रा कोडिंग लिखिया को पड़िबो कोन से क्लास सिलेक्टर नाटा लिखिया को पड़िबो. क्लास करिके ता नाटा लिखिया को पड़िबो. से कहूची क्लास सिलेक्टर दबा दरकार नै. हमें डायरेक्टली एमती ग्रुप कर दबा h1 p कलर रेड. तो जेते h1 रहइबो जेते पैराग्राफ रहइबो तार कलर टा एमती रेड आसीबो. बुझिला सर सर हेडिंग रे ईच वर्ड अलगा अलगा कलर दे हबो की ईच वर्ड ना जदि सेमते हबन हबो सेत में स्पान यूज करा जीवो. हमरे स्पान पढ़तले ना. अच्छा सर तो स्पान यूज करके हमें स्पेसिफिक माने गोटे सेंटेंस रे जदि हमें स्पेसिफिक वर्ड को जदि कलर करबा को चाहूचे ताले सेटे स्पान यूज माने हो. तेटा हाइलाइटर हिसाब से यूज हबो स्पैन टा. हां हां ओके सर मु एटा के डिफाइन करूची देखियो. एटा रहला हेडिंग पे गोटे डिफाइन करछि स्टाइल h1
color red, then same thing I apply for the paragraph. Okay. Then it is heading ରହିଲା। मोटे किसी कंटेंट एठी पके दउची। This one is pass I in division, एटा मो डिवीजन टैग अंडर रे पास कर दउची। Then here I pass the paragraph, एठी मो paragraph पास करिवे। This is paragraph example, the paragraph is end here। Now I save the file save as, group style, group style before dot html। So now I check how it is working। Right click, open with, okay, so this is a heading one and this is a paragraph। Okay, so here what is the problem, like here we're separately using the same style we're using for paragraph and heading। So here it's saying that without writing the separate paragraph, then you write here comma p, in this way you can also pass। Okay, the same color we're applying, this color heading one, this is a paragraph example। If you want to give a same color to the different element, you can pass here। बुझेला? ଆଜ୍ଞା sir। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ଅଛି sir? ଏଇଟା ତୁମେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଣ୍ଡମଲି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ତମ ପାଖରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଲେଖିବାକୁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ୱାର୍ଡ ଓପନ କରିବ, ୱାର୍ଡ ଓପନ କଲା ପରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନଟା ଲେଖିଦବ। इक्वल्स टू रैंडम फंक्शन, वर्ड रे जदी रैंडम फंक्शन एमती डिफाइन करिकी एंटर मारुछ से ऑटोमेटिक लेखाटा आसी जिवो। ता तमे जे कोनोसी लेखार एग्जांपल दे परियो, एडू कॉपी करी सेठी पेस्ट कर दो। बुझ पाइलो? आज्ञा सर।
एटा फॉर एग्जांपल बट यू राइट योर कंटेंट तमे निज कंटेंट एमती डिफाइन करि परिबो the grouping style let me copy the notes next is a nesting style so consider a web page where the list of paragraph nested inside a division okay list of paragraph माने paragraph टा division under भितरे अछि and you may want to apply the style to the nested element to enhance its look and feel माने जो paragraph गुडा को division under रे define ହେଇछि तार look and feel टा मु टिके change करिवे the style can be applied to nested element by using class or id selector मु class और id selector करके use करि परिवे however using such selector may sometime increase the size of the code coding the size टा से बढ़े दबो or add its complexity so therefore to achieve a code optimization माने कोड टा को आउरी छोटो आ कंप्रेस करिया को लिखिबा पई css introduce a nesting of style with a nesting style you can apply the style for an element within an element गोटे element under रे आ गोटे element को मु जदि style करिया को चाहूची मु nesting style टा यूज करिवे that is a economic way for styling the element within an element which discard the use of class or id selector in the code तो मुझे तो लिखिबी element greater than element 2 and division greater than paragraph it select all the paragraph element where division is their immediate parent element ମାନେ division ଟା ହେବ parent element ता अंडर रे जो paragraph थिबो से ताको स्टाइलाइज करिवो मु खाली लिखिबी division p select all paragraph element inside the division element division भितरे जो paragraph थिबो सेटा इटा पास करा जिवो division p and division plus p select all the paragraph element that is placed immediately after the division परे division immediately परे जो paragraph टा define करा हितिबो तो सेटा से चेंजेस करिवो मुझे लिखिबे division tiled symbol p select all the paragraph element that follow the division element माने paragraph परे जो division थिबो तो से समय से paragraph टा को ही ताको कोन करिवो ना स्टाइलाइज करिवो बुझियला चारटा पांचटा जो चारटा प्रॉपर्टी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା sir that is called as the nesting style
Okay, so next I will show you the nesting style of HTML. I just copy that part of code. Okay, so it is a division greater than paragraph. I'll show it. Looping1.html. तो चेक हियर एठी कोन आसीबो एग्जांपल एठी देखै दउची
एठी रहला कोन डिवीजन ग्रेटर देन पैराग्राफ दैट मींस डिवीजन अंडर रे जो पैराग्राफ अछि एठी गोटे डिवीजन रहला ये जो डिवीजन अंडर रे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 रो कलर हैला येलो तापर नेक्स्ट डिवीजन देखो तापर एटा गोटे कोन रहला एटा डिवीजन मोर एंड होची एटा सेक्शन रहला पैराग्राफ 3 एटा होबन तार एठी रहला पैराग्राफ 4 एठी भी एठी पैराग्राफ 4 टा हबो तार एटा सेक्शन अंडर रहि गला तो से सेक्शन अंडर रहि गला तो 3 टा को से हाईलाइट करलानी किंतु तापर जेतरा पैराग्राफ करूची सेटा देखिए माने डिवीजन अंडर रे जते भी पैराग्राफ हमें डिफाइन करबा ता कलर को से येलो कलर देला आ एटा देखो ए जो दुटा पैराग्राफ रहला एटा डिवीजन बाहर रहला तो सेति पई कोन हला ना अलगा कलर आसीला बुझेला ଆଜ୍ଞା sir। ଆଜ୍ଞା sir। ओके सागर बुझेला यस सर यस सर यस ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे आर ग्रुपिंग स्टाइल बढ़िया हला सर आज्ञा सर। एंड्रॉइड रो किछ करथिले कि आपण एंड्रॉइड एंड्रॉइड ऐप किछ बनौथिले कि हां 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 ऐसे ऑन अछि तो मुझे सब पचारे ओके ठीक अछि चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।